Okay, so how many of you have started practicing listening? How many of you have started practicing listening of IELTS? Yeah, Bharti, I'll come to that part. Okay, so first and the foremost thing is we will be taking listening and we'll be dedicating this entire session to maps. Now, let me tell you, students, that I don't know how many of you have started practicing listening, but listening is relatively easy. If I talk about getting a very good score in IELTS, then listening is the module that you cannot afford to miss. I mean, you can get 8.5 bands, 9 bands in listening if if you're done proper practice of that. In listening, there are two difficult type of questions. The first, obviously, is multiple choice questions. I know that many of you have started doing the practice of listening, and they might have found out that multiple choice questions is very difficult to cope up with. But again, the second difficult type of question is maps. And usually maps, I have seen maps coming in recent IELTS examinations, and students are finding it very difficult because unlike reading, in which the map also comes, uh, you have got the time to go through the information once again. In listening, you cannot do that. So in listening, you have to, you are only given the opportunity to list. I mean, go through the maps for once, and that is how you can do the maps. Now, without wasting your time, let me first of all tell you that have you all got notebook and pencil in front of you? First of all, have you all got notebook and pencil in front of you? Yes or no? Because here you are going to do lots and lots of practice. आज बहुत practice होगी. मैं सब में हेल्प नहीं करूंगा, थोड़ी थोड़ी चीजों में मैं हेल्प करता रहूंगा. But this is going to be a fantastic session. मैप्स में काफी मजा आएगा आपको. Is it getting clear? Okay. So yeah. First of all, let me concentrate on this, and then I'll come down to your queries, as early as possible. Now, before we jump onto the maps, let me explain you the terminologies which are usually used in maps. First and the foremost thing that whenever you encounter map in IELTS, you need to have the knowledge of this direction. The cursor you can see on your right hand side indicates the map. I mean the direction. So you have to have this knowledge. North, this is south, this is west, and on the right hand side is east. Now whenever you get confused, I always recommend my students that you always have to have the map of India in front of you, because map of India is the only map in which there are 4 unique directions. So if you are if you are confused, then you always know that Kashmir is on the north, Kanyakumari is on the south, Gujarat is on the west, and Bengal is on the east. So that way you'll be able to get the things. Okay, now I want somebody to read so that I can focus on explanation. Who's going to help me out for reading? Yes, please do it very fast. बहुत बड़ा सेशन होगा क्योंकि 8 या 10 मैप्स मैं कवर करूंगा, और आपकी या Jansruth will help me out. Just a minute. Yeah, Jansruth, is my voice audible to you? Yes, sir. Am I audible? Yeah, you are audible. Okay, fine. Can you start reading? So now I want everybody to focus on the the photograph given, the diagram given. You can see this is a diagram given to you. There is a gym, there is a pool, there is a sitting area on your right hand side, changing room on your left hand side, outdoor courts again on the far left hand side, outdoor courts again on the farther right hand side, and you are entering from here reception. Now you need to understand the terminologies which the IELTS listening people utilizes very often. तो आपको पता चलना चाहिए कि ये terminologies क्या है. So let us start with this one. Can you read the first sentence? Yes, sir. The entrance is in front of the reception desk. So you can see this is the entrance. So obviously अगर ये इसके सामने है तो it is utilized in front of the reception desk. मैं इसमें ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूंगा because otherwise we'll be wasting lots of time. Yeah, please go ahead. The reception desk is facing the entrance. Okay. Third. The pool is in the center of or in the middle of the sports center. या यू कैन सी, जब जनश्रुत रीड कर रहा है तो मैं अपना कर्सर उस तरफ घुमाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा. धीरे धीरे रीड करना जनश्रुत, सो इट इज वेरी क्लियर. या Okay. The gym is behind the swimming pool. The gym is behind the swimming pool. The gym is behind the swimming pool. ये स्विमिंग पूल है, उसके पीछे जिम है. हाँ जी. The pool is between the reception and the gym. So you can see the pool is exactly in the center of gym and the reception. तो आप between का इस्तेमाल किया आपने. Okay, then. The sitting area is next to or by the pool. Yeah, so you can also say that sitting area is next to the pool,
और बाय द पुल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट तो आपको पता होगा, लेकिन कभी कभार बाय द पुल बोला है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये बाजू में है, तो भी हम विल बी टॉकिंग बाय द पुल। ओके, लेट अस गो फॉर सेकंड टर्मिनोलॉजी। ये पहले मैं चाहूंगा सब बच्चे इस डायग्राम को फिर से ठीक से देखें। यहाँ से आप एंटर होते हो, रिसेप्शन है, इस तरफ कैफे, स्पोर्ट्स शॉप, चेंजिंग रूम, इस तरफ दोनों तरफ डांस स्टूडियोज है, यहाँ पे स्पोर्ट्स हॉल है, जिम है, ये पूल है, एंड दिस इज अ लीजर पूल। ओके, कैन यू सी स्पीक नाउ? This the sports shop is on the left hand side as yours and as you enter the sports center. एग्जैक्टली, तो आप जब एंटर होते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड स्पोर्ट्स शॉप है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल होगा लिसनिंग में जब हम करेंगे, तो जरा गौर कीजिए। हाँ जी। To the right hand side of the entrance, there's cafe. To the right hand side of the entrance there is a cafe. तो इस तरफ right hand side हुआ, तो this is a cafe. Yes, then Pass through the entrance, turn right, and the cafe is immediately in front of you. तो आप जहां पे एंटर होते हो, टर्न राइट करते हो, उसके सीधे ही सामने आपको कैफे मिलेगा। तो दूसरा तरीका है, द कैफे इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ यू। आप यहां से एंटर होते हो, राइट हैंड साइड घूमते हो और कैफे आपके राइट हैंड साइड पे है। ओके, देन The laser pool is on the other side to the dance studios. द लीजर पूल इज ऑन द अदर साइड ऑफ द डांस स्टूडियोज। तो देखो ये डांस स्टूडियोज है, तो एग्जैक्टली उसके अदर साइड पे है लीजर लीजर पूल। ओके, देन There is a large changing room just beyond the cafe. There's a large changing room just beyond the cafe. Beyond the cafe, तो कैफे आपका कहाँ, ये रहा, और बियॉन्ड मतलब आगे। तो ये भी एक छोटा सा वर्ड है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। बियॉन्ड का सर मतलब क्या? बियॉन्ड का मतलब उसके आगे। ओके, देन Walk along the side of the sports hall and you'll find the second dance studio in the far corner of the building. बहुत अच्छा ये टर्मिनोलॉजी है। गो या वॉक अलोंग द साइड ऑफ द स्पोर्ट्स हॉल, मतलब ये स्पोर्ट्स हॉल के साइड में आप गए और एग्जैक्टली डांस स्टूडियो फार एंड पे है। फार एंड मतलब बिल्कुल दूर का किनारा। ओके, देन Go straight along the corridor besides the sports hall and to your right you'll see two dance studios. हाँ, गो स्ट्रेट अलोंग द कॉरिडोर, ये आपका कॉरिडोर है, लेकिन कौन सा कॉरिडोर? ऐसा कॉरिडोर जो स्पोर्ट्स हॉल के बाजू में वाला, बाजू में है। तो ये स्पोर्ट्स हॉल हुआ, उसके बाजू में कॉरिडोर है। इस तरफ आप घूमेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको दो डांस स्टूडियोज मिलेंगे। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा है। या गो हेड। The houses immediately to the north and the south of the post office are very near the river. या सो ये कौन सा हुआ? हाउसेस कौन से हुए? द हाउसेस इमीडिएटली टू द नॉर्थ एंड साउथ, दोनों तरफ हाउसेस है। पोस्ट ऑफिस के दोनों तरफ हाउसेस है। ओके, आर वेरी नियर टू द रिवर। पहले देखो रिवर कौन सी है, ये रिवर स्टोक है, ये रिवर है। ओके, देन The bridge is just beyond the final row of houses heading north. हाँ, तो ये जो हाउसेस है, आप ब्रिज एग्जैक्टली आगे है, आप देख सकते हो बियॉन्ड द फाइनल रो, ये फाइनल रो है, एंड हेडिंग नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ की तरफ यहाँ पे जाओगे तो ब्रिज मिलेगा आपको। देन The retirement home is just southeast of the primary school. सो द रिटायरमेंट होम इज जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल। तो आप देख सकते हो ये प्राइमरी स्कूल है, उसके साउथ ईस्ट पे। तो जरा याद रखना कि नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ तो है, तो ज्यादातर बोला ऐसा जाता है अगर बीच में यहाँ पे है तो इसको साउथ ईस्ट कहा जाएगा। दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट एंड दिस इज साउथ वेस्ट। सो यू नीड टू ऑल्सो रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजीज। तो ये रिटायरमेंट है, ये प्राइमरी स्कूल यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इसके इस तरफ होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी साउथ ईस्ट। ओके, देन The post office is to the northwest of the retirement home. तो आप यहाँ पे देखो ये रिटायरमेंट है, इसके एग्जैक्टली नॉर्थ पे नहीं है, इस तरफ है। सो इट इज गोइंग टू बी नॉर्थ वेस्ट। तो रिटायरमेंट होप के नॉर्थ वेस्ट पे है पोस्ट ऑफिस। देन The village of Stockford is slightly east of the river Stock. हाँ, तो ये जो विलेज है ये थोड़े से ईस्ट पे है, इसके ईस्ट पे है ये विलेज ऑफ स्टॉकफोर्ड। ओके, देन There is a housing estate to the west side of the retirement home. देयर इज अ हाउसिंग एस्टेट ऑन द वेस्ट साइड। ये रिटायरमेंट होम है, उसके वेस्ट साइड पे हाउसिंग एस्टेट है। ओके, फाइनल टर्मिनोलॉजी, जस्ट अ मिनट। या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बैंड वाला जो होता है, इसमें बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं, तो मैं चाहूंगा इस पे जरा गौर कीजिए कि बैंड क्या होता है। आइए, प्लीज गो हेड संस्कृत। The school is situated on a bend in the dual carriageway. तो ये ड्यूअल कैरेज वे है, और ये बैंड हुआ जो ये घूमता है यहाँ पे, इसको हम बैंड कहेंगे। तो स्कूल इज सिचुएटेड ऑन ए बैंड इन द ड्यूअल कैरेज वे, तो ये आपका स्कूल हुआ। ओके, देन The bus station is on the right, just past the shopping center.
तो आप यहाँ पे शॉपिंग सेंटर में चलते चलते आगे गए, उसके जस्ट राइट इसको पास किया और बाद में तुरंत ही आपको बस स्टेशन, बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, द बस स्टेशन इज ऑन द राइट जस्ट पास द शॉपिंग सेंटर, मतलब आपने शॉपिंग सेंटर आगे आगे बढ़े, उसके आगे गए और एग्जैक्टली ऑन द राइट हैंड साइड देयर इज अ बस स्टेशन. ओके, देन The town center has a pedestrian walkway running alongside a row of adjoining shops. तो टाउन सेंटर इज अ पेडेस्ट्रियन वॉकवे, ये रहा पेडेस्ट्रियन वॉकवे रनिंग अलोंग साइड ए रोड ऑफ रो ऑफ एडजॉइनिंग शॉप्स. आप देख सकते हो दो इसके तरफ एडजॉइनिंग शॉप्स है. ओके, देन After passing the school on your right, carry straight on and you will see the park on your left around the next bend. तो यहाँ पे आपने स्कूल तरफ देखा, आगे 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 गए, कैरी स्ट्रेट ऑन किया एंड यू विल सी द पार्क. आप देखिए यहाँ पे घूमे, पार्क ऑन योर लेफ्ट, क्योंकि अगर आप खुद ऐसा सोचो कि मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो आप आगे आगे गए तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये पहला बेंड, जो पहला नेक्स्ट बेंड मतलब जो तुरंत बेंड आता है उसके लेफ्ट के तरफ पार्क है. तो कितना सुंदर है. आफ्टर पासिंग द स्कूल ऑन योर राइट, आफ्टर पासिंग द स्कूल ऑन योर राइट, carry straight on and you will see the park on the left around the next bend. तो आप घूमते घूमते आगे गए और इस तरफ आपने पार्क देखा. Is it getting clear now? So let us now start practicing. Jansru, thank you so much. And I want now students to get started with the listening listening maps. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, is the picture picture absolutely clear to everybody? Yes or no? Is the picture clear to everybody? Yes, let us get started. Carefully and answer questions 6 to 10. Okay, I want you people to just go through it. मैं चाहूंगा थोड़ा सा go through कीजिए कि भाई कैसा दिख रहा है. आप यहाँ पे हो, यूजुअली क्या होगा कि आपको पता है ये यू आर हियर जो है आप पे उस पे फोकस करना है. यू नीड टू फोकस ऑन वेयर यू आर देयर. तो यहाँ पे देखो ज्यादातर मैप्स में यू आर हियर लिखा होता है, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो ठीक है, लेकिन अगर लिखा है तो कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि यू आर हियर मतलब आप यहाँ पे हो, एंड देन यू नीड टू गेट द आंसर्स. ओके, लेट मी सी इफ दिस कैन बी टर्न्ड इनटू फुल स्क्रीन. यस, अब दिख रहा है आपको? कैन यू सी नाउ? Okay, let's get started. But how do I find the main hall? Right. If you look on the back of the booklet I gave you, you'll see. Okay, first of all, in your notebook, write 6 to 10. I want everybody to write 6, 7. अगर notebook नहीं है आपके पास तो notebook लेके आइए और notebook में लिखिए 6, 7, 8, 9, 10 और बाद में प्रैक्टिस कीजिए और उसके सामने आंसर लिखिए. What you need to do is, जैसे कि फर्स्ट करो 6 का आंसर कंप्यूटर लेबोरेटरी है तो आपको CL लिखना पड़ेगा. अगर 7 का आंसर डायरेक्टर्स ऑफिस है तो आपको DO लिखना पड़ेगा. That's it. You also need to understand how the answers can be written. Clear? Now tell me when you are done with writing 6 to 10 in your notebook. Once you are done, let me know. Done? 6 to 10 लिख दिया आपने notebook में? Very good. चलिए start करते हैं. A map of the school. Let me show you. Look, you came in through the main entrance here, and now we're here at reception. Now, to get to the main hall, you walk on to the end of this corridor in front of you, and then you turn left. Walk along past the language laboratory, and then past the library, which is next to the language lab on the same side, and facing you is the main hall at the end of the corridor. Can't miss it. So it's next to the library, in fact. Yes, that's right. I should be able to find that. And do you have computer laboratory? Yes, we do. Could you tell me where that is? Certainly, yes. You go down to the end of this corridor again, but this time don't turn left, turn right away from the main hall. The computer lab is immediately on your right, okay? And where's the staff room in case I need to find a teacher at some stage? The staff room is near the main entrance, on the left over there, just opposite the reception desk. In a day or two, I'm sure you'll find your way around very easily. Oh, one last thing. Is there a student common room? Oh, yes, I forgot to mention that. It's this area here, very close to where we are now, to the right of the reception desk as you come in the main entrance. There's tea and coffee facilities there. Great. Thank you very much. You're welcome. Answers. Please let me know of your answers. What is the answer of 6, 1? What's the answer of 6? Give me answers of all.
ओके सो सी अगर आपने देखा होगा, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस, अगर आपने ठीक से किया होगा तो समथिंग लाइक दिस, आप यहाँ पे एंटर होते हो, आगे जाते हो, इस तरफ जाते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले आपको लाइब्रेरी मिलती है। सो 6 का आंसर इज गोइंग टू बी लाइब्रेरी एंड एग्जैक्टली 7 जो है वो आपका मेन हॉल है। सो 7th आंसर इज गोइंग टू बी MH। अब वो पूछती है कि लेबोरेटरी कहाँ है, तो उसने ऐसा बताया कि आप यहाँ पे आगे जाइए, इस तरफ जाइए, तो आपके लेफ्ट राइट हैंड साइड पे यू विल फाइंड आउट लेबोरेटरी। ओके, कंप्यूटर लेबोरेटरी। देन उसने ऐसा बोला कि स्टाफ रूम कहाँ पे है, तो स्टाफ रूम एग्जैक्टली ऑन, जब मेन एंट्रेंस से अंदर एंटर होते हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे यू विल फाइंड आउट स्टाफ रूम। और स्टूडेंट कॉमन रूम कहाँ है, कि इस तरफ जाओगे तो ये 10 जो है वो है स्टूडेंट कॉमन रूम। इज इट गेटिंग क्लियर एवरीबडी? यस और नो? डू यू वांट मी टू रिप्ले और इज इट फाइन? प्लीज राइट इन द chat box. If you want me to replay it, I can do it, but if it is good, we can go ahead with the next one. So ये है आपके आंसर्स, this is going to be your answer. These are the answers, go through it. So 6th is going to be library, 7th is going to be main hall, 8th is going to be computer laboratory, 9th is going to be staff room and 10th is student common room. याद रहे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, but eventually you need to write this terminologies. आपको ये लिखना पड़ेगा CL, DO, S या जो भी अवेलेबल है. Is it getting clear? So I hope this is fine to everybody. Okay, now let us go for the next one. आगे बढ़ते हैं. Just go through this once again. जल्दी से देख लो इसको. Yes, go through it. ये थोड़ा सा, हाँ, just a minute. I'll try to. Okay, let's go ahead. Now listen and answer questions 17 to 20. Okay, but before we go through that, I wanted to go through, the entire picture, because in the real examination also you're going to get time for that. Yeah, Shreya, I can do that, but yeah, let me concentrate on this first. पहले इसको देख लीजिए ठीक से, देखिए कितने करने हैं आपको. You need to do questions number 17, 18, 19 and 20. Just try to go through the graph. मैप को देख लीजिए. 17 कहाँ है, ऊपर जो टर्मिनोलॉजीज है वो उसको भी देख लीजिए आप. Art studio, football pitch, dance studio, fitness room, reception, squash courts and tennis courts. Understood? So first of all, 16, 17, 18, 19. Sorry, 17, 18, 19 and 20. Shall I start now? Let me know when you are done going through it, because in the real examination also you are going to get time. Okay, let us start. So, what exactly are the facilities? What sports can you play here? Well, this room we're in at the moment is called the main hall, and it's used mainly for team sports such as football, volleyball and basketball. So यहाँ पे देखना है आप कहाँ पे हो अभी, यहाँ पे मेन हॉल पे हो. तो ये फर्स्ट जो है उन्होंने बताया कहाँ पे, वो लोकेशन ढूंढनी और समझनी बहुत जरूरी है. याद रहे मेन हॉल खुद आंसर नहीं है, आपको बताया गया है कि आप मेन हॉल पे हो, क्योंकि उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर देने हैं 17, 18, 19 और 20. But also for badminton and aerobics. On the other side of the reception area is the dance studio. This provides smaller, more intimate space, which we use for ballet, modern dance and martial arts. Okay. यहाँ पे मैंने पॉज इसके लिए किया कि अब दो आंसर्स ऑलरेडी एक ही लाइन में उसने बोल दिए. Can you tell me what are the two answers that they have spoken? They have given answer of, two questions in one sentence. On the other side of dance studio, on the other side of the reception area, there is a dance studio. So आप बताएंगे दो आंसर्स हो गए, तो बताएं. तो 17 जो है on the other side of the reception area उन्होंने बोला is the dance studio. तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, रिसेप्शन एरिया, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ दैट इज अ डांस स्टूडियो, मतलब 18 का आंसर इज गोइंग टू बी डांस स्टूडियो. अंडरस्टूड? ओके. Not at the same time, of course. Then, in a separate building, which you may have noticed on your way here, it's on the other side of the car park, there are the squash courts, 6 of them. And at the far end of the building, a fitness room. This is our newest facility, only completed in the spring, but it's already proving to be one of the most popular. As well as all these facilities available here on the campus, we also have an arrangement with the local tennis club, which is only 2 miles away, entitling our students to use their courts on weekday mornings in the summer. Okay, so what is the answer of 19? 6 of them, उन्होंने पहले बताया था 6 स्क्वाश कोर्ट्स है.
So that means what is the answer of 19th one? Can anyone tell me what is the answer of 19th one? The answer of 19th one 6 बोला था उन्होंने. So answer of 19 is going to be squash courts. तो याद रहे जब आप आंसर लिखते हो तो यहाँ पे कॉपी करके लिखना है आपको squash courts. जो लोग those who are going to give examination on computer, they have got the liberty to copy, but जो लोग pen and paper test दे रहे हैं उनको ये ठीक से लिखना पड़ेगा. squash का जो spelling होगा वो ठीक होना चाहिए. और लास्ट में उन्होंने बोला कि squash courts के इस तरफ जो है that is going to be the fitness room. तो 20 का आंसर जो है it's going to be the fitness room. Understood? So this is going to be your answer. ये आपके आंसर्स होंगे. 17 is going to be reception area, 18 is dance studio, 19 is squash courts and 20 is fitness room. Okay, let us go for the next one. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं चाहूंगा इसको ठीक से आप देखें. Let me know when you are done going through it. आपने ऊपर इंस्ट्रक्शन में देखते हैं यहाँ पे कोई भी आपका आंसर 2 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए. द आंसर शुड नॉट बी मोर देन 2 वर्ड्स. Let me know when you're done. Now listen and answer questions 14 to 20. So write down in your notebook 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. पहले देखो कहाँ पे दिखना है. एंट्रेंस को देखो कहाँ पे है. Where is the entrance? Somewhere over here. So you need to focus on this. ज्यादातर केस में एंट्रेंस दिया जाता है या तो फिर मेन you are here ऐसा लिखा होता है. Okay. Shall I go ahead now? Let me know when you're done reading. Okay. So let us get started. Now, I'm going to give you a plan of the site, and I'd just like to point out where everything is, and then you can take a look at everything for yourself. I've already pointed out the river, which is on the left, and of course, running along the bottom is Woodside Road. Got it? Okay. Now, we're standing at the entrance. See it at the bottom? And immediately to our right is the ticket office. You won't need that because you've got your group booking, but just past it are the toilets. Always good to know where they are. In front of us is the car park, as you can see, and to the left, by the entry gate, is the gift shop. That's where you can get copies of the guide, like this one here. Now, beyond the car park, all the buildings are arranged in a half circle with a yard in the middle. The big stone building at the top is the main workshop. That's where the furnace is and where all the metal was smelted and the tools were cast, as you'll be able to see. Now, in the top right-hand corner, that building with bigger windows is the showroom, where samples of all the tools that were made through the ages are on display. In the top left corner is the grinding shop, where the tools were sharpened and finished. And on one side of that, you can see the engine room, and on the other is the cafe, which isn't an antique, you'll be pleased to know, though they do serve very nice old-fashioned teas. The row of buildings you can see on the left are the cottages. These were built for the workers towards the end of the 18th century, and they're still furnished from that period, so you can get a good idea of ordinary people's living conditions. Across the yard from them, you can see the stables, where the horses were kept for transporting the products. I'm giving you time to write your answers. Tell me what are the answers. Do you want me to replay it? If you want me to play it again, I can do that. No, very good. ओके सो आपने देखा यहाँ पे आप एंट्रेंस 14 का आंसर थोड़ा सा अगर आपको पता होगा, उसने बोला कि ये जो रिवर है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड क्या है, दैट्स अ वुडसाइड रोड. सो 14th आंसर इज गोइंग टू बी वुडसाइड.
उन्होंने ऐसा बोला कि 15th इसकी तरफ आपको टिकट ऑफिस होगा, सो 15th का आंसर इज गोइंग टू बी टिकट ऑफिस। उन्होंने ऐसा बोला कि टिकट तो आपने ऑलरेडी ले ली है क्योंकि ग्रुप बुकिंग किया था, सो यू डोंट नीड टू परचेज द टिकट्स। देन आपके सामने की तरफ है कार पार्क और एग्जैक्टली एंट्रेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे है गिफ्ट शॉप, सो आंसर ऑफ 16 इज गोइंग टू बी गिफ्ट शॉप। यार्ड आपके सामने जो है वो यार्ड, और ये जो बिल्डिंग्स के अरेंजमेंट है इट इज इन द सेमी सर्कुलर वे। उसके एग्जैक्टली सामने 17 की तरफ जो है दैट्स व्हाट वी कॉल एज 17 का जो स्टोन में बना हुआ है बिल्डिंग, इसको आप मेन वर्कशॉप बोलेंगे। और एग्जैक्टली इसके लेफ्ट राइट हैंड साइड इस तरफ 18 का आंसर जो होगा दैट इज गोइंग टू बी शोरूम। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि ग्राइंडिंग शॉप है मेन हॉल के लेफ्ट हैंड साइड पे, और ग्राइंडिंग शॉप के एक तरफ है इंजन रूम और उसके दूसरे तरफ है 19 जो आंसर है दैट इज कैफे। और बाद में उन्होंने ऐसा बोला लास्ट में कि दिस आर द कॉटेजेस फॉर द वर्कर्स, सो 20 का आंसर इज गोइंग टू बी करेज नहीं है आयशा, इट इज कॉटेजेस, इट्स द कॉटेजेस फॉर द वर्कर्स। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इज इट फाइन स्टूडेंट्स? अब इसको हम वापस करेंगे। सो दिस आर द आंसर्स, चेक इट आउट वेदर हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट ऑल राइट, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट ऑल राइट? 14 to 20, 14 is Woodside, 15 is ticket office, 16 is gift shop, 17 is workshop. These are all very good answers. Yeah, if you got all right, that is fantastic. Yeah, I can see many students have got all right. Great. Yeah, done. Okay, 17 का आंसर जनश्रुत यहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला था, 17 ये है, पहले जो स्टोन बिल्डिंग बना हुआ था लेकिन इसका नाम जो है दैट इज मेन हॉल, सो आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी मेन हॉल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इज इट फाइन? चलिए, लेट्स गो फॉर द 14th वन, फोर्थ वन। ये भी थोड़ा सा अलग है, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। हाँ, दैट विल टेक सम टाइम जनश्रुत, बट आई एम सी, मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि सारे के सारे जो मैप्स है मैंने कोई बुक में से नहीं लिए, मतलब आई हैव नॉट टेकन इट फ्रॉम एनी बुक आउटसाइड ऑफ कैम्ब्रिज। So these are all the maps which have come in the Cambridge. Cambridge 1 से लेके 16 तक जो भी कैम्ब्रिज है उसमें जो मैप्स आते हैं उसी वे से मैंने लिए हैं। So you can expect the similar level of listening to come in the real examination, neither tough, neither easier. So that's the reason you can practice this and get to know where you stay as far as maps are concerned. अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन वापस कहना चाहूंगा ये सारे कैम्ब्रिज वाले ही है। ओके, लेट्स गो हेड नाउ। मैप नंबर 4, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, now I want you people to write 14, 15, 16 and 17 in your notebook. Write 14, 15, 16, 17 in your notebook. Okay, आगे बढ़ते हैं। When you gone through it, when you gone through Now it, listen and answer questions 14 to 20. yeah, let me know when you are done reading. देखो लोकेशंस, ये थोड़ा सा अटपटा है, यहाँ पे 14 कहाँ है, 15 कहाँ पे वो नहीं दिया है आपको। 14 के सामने ABCDEFG लिखना है, clear? But obviously the answer, I mean, your pathway is going to start from information center. Let me know when I should start. आपको ये 4 keywords आपके लिए, Pear Alley, Mulberry Garden, shop and tea room. These are the 4 keywords. So you need to concentrate on that. Now, please look at the map I've given you of the house and gardens. We're here at the information centre. Follow the path marked with the arrow, and the first area you come to is the orchard on your left. As you go further down the path, there's the kitchen garden on the right. And as you go round the first sharp corner, you will find to your left an area where different types of pear tree have been planted, as well as some lovely flowers. And this is known as Pear Alley, designed by George himself. Next to this is the greenhouse, where some exotic plants and fruits are grown. Follow the path round the second corner, and on your right you will see the entrance to the mulberry garden with its 500-year-old tree. Past the mulberry garden, follow the path until you reach the front of the house. I suggest you spend a good hour wandering around this lovely building. A guide takes visitor groups round every 2 hours. If you would like to purchase any of George's books or other souvenirs, then leave the house by the side entrance, where you will find our shop, which is situated between the house and the garage, which contains the magnificent old Rolls-Royce car, which used to belong to George.
I expect by this time you may also be in need of a rest and some refreshment. Most visitors are. So why don't you visit the tea room on the far side of the garage? If you have time, there is a lovely walk down towards the River Dudwell. For me, this is the best part of the estate. This isn't on the map, but it is all clearly signposted. You cross the field, which spreads along the banks of the river. In spring, this area is well worth a visit. Spend a minute or two watching the water pass by underneath as you cross the footbridge. Yes, who is getting all the answers right? यहाँ पे उन्होंने बताया था कि यहाँ से आप निकलते हो या आंसर ऑफ फर्स्ट इज गोइंग टू बी एच. एच जो आपको देखिए याद रखना है, ये जो कीवर्ड्स है उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है. पेरेली, मलबरी गार्डन, शॉप एंड टी रूम. शायद मुझे पता है कि लोगों को ये तो पता चल जाएगा ये एच जो है, सो 14 पेरेली इज एच, सो 14th आंसर इज एच. एंड देन यू नो ऑन योर राइट हैंड साइड यू विल फाइंड आउट ये जो है मलबरी गार्डन इज गोइंग टू बी एफ. So I believe that you might have not faced any problems between H and F. But what about I can see that answers of last two questions are not proper, or I can see last दो है वो confusing है, तो मैं एक काम करता हूँ last जो है वो वापस play करता हूँ. Understood? Past the mulberry garden, follow the path until you reach the front of the house. तो यहाँ पे आ गए आप. शायद 14 का आंसर H और 15 का F सबका सही है, ऑलमोस्ट सही है. अब मैं हाउस पे आता हूँ. I suggest you spend a good hour wandering around this lovely building. A guide takes visitor groups round every 2 hours. If you would like to purchase any of George's books or other souvenirs, then leave the house by the side entrance, where you will find our shop, which... Leave the house by the side entrance. और यहाँ पे आप देख भी सकते हो थोड़ा सा एक दरवाजे जैसा दिखाया भी है. और इस तरफ जो होगा, जो पहला होगा, that is going to be shops. तो आंसर ऑफ 16 इज गोइंग टू बी देयरफॉर शॉप, मतलब बी होगा. आंसर ऑफ 16 इज बी. अब बाकी रहता है 17 कौन सा है, तो उसको देखते हैं. is situated between the house and the garage. सो ये जो है ये शॉप है, इट इज लोकेटेड बिटवीन द हाउस एंड द गराज. तो सी जो है दैट इज गोइंग टू बी गराज. लेकिन क्योंकि यहाँ पे गराज नहीं दिया गया है तो वी आर नॉट गिविंग आंसर ऑफ सी. लेकिन इससे ये पता चल जाता है कि शॉप जो है इट इज लोकेटेड बिटवीन हाउस एंड द गराज. नाउ वी आर लुकिंग फॉर टी रूम. टी रूम कौन सा है? अब हमारे तरफ दो ऑप्शन है, या तो टी रूम ए हो सकता है या तो टी रूम डी हो सकता है. लेट अस सी. Which contains the magnificent old Rolls-Royce car, which used to belong to George. I expect by this time you may also be in need of a rest and some refreshment. Most visitors are. So why don't you visit the tea room on the far side of the garage? On the far side of the garage. तो याद रखना है कि आपने अगर गराज ठीक से नहीं देखा है तो आपको टी रूम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको याद ही नहीं होगा कि गराज कौन सा है. तो ये गराज जो है ये सी है, और उसके फार एंड की तरफ जो है that is going to be tea room. तो आंसर ऑफ 17 is going to be therefore D. Understood now students? Clear हो गया अब? Yes or no? Understood? Okay. If it is not clear, I can play it again. It is absolutely fine. Is it fine? Yes or no? Okay, great. Okay, आगे बढ़ते हैं. ये थोड़ा सा easy है. This is going to be an easier one. दो ही है. आंसर 11 and 12 दो ही है, बहुत easy है. I'm not going to play this again. Now listen carefully and answer questions 11 to 18. आपको दो ही करने हैं. Thank you for calling the tourist line. There are many different ways of getting round the city, and we'd like to suggest some you may not have thought of. How about a city trip by boat? There are 4 main stopping points. From west to east, stop A, Greenbanks, stop B, City Bridge, stop C, Roman Landing, and stop D, Newtown. You can find the main booking. खत्म हो गया. So what is the answer of? ये बहुत easy था. So stop B कौन सा था? सिर्फ याद रखना है कि जो लास्ट है न्यू टाउन, उसका स्पेलिंग ठीक होना चाहिए. So you have to have correct spelling of न्यू टाउन. Okay, so stop B is going to be City Bridge.
So 11th का आंसर होगा सिटी ब्रिज एंड 12th इज गोइंग टू बी न्यू टाउन. न्यू टाउन का स्पेलिंग ठीक हो जरा देख लेना. ठीक है, लेट अस गो अहेड नाउ. हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलिए इसको करते हैं. ये सारे कैम्ब्रिज वाले हैं, so you don't need to worry about it. You can expect the similar level. नहीं, न्यू टाउन आपको सारा कैपिटल में लिखना पड़ेगा. हाँ, अच्छा हुआ, you know, somebody has asked me a question, पंकज has asked me a question कि सर ये आंसर्स कैसे लिखने हैं. I would strongly recommend students कि आप सारे के साथ सारे जो आंसर है वो कैपिटल में लिखे, चाहे वो आपकी पेन एंड पेपर टेस्ट हो या कंप्यूटर टेस्ट हो. प्लीज राइट ऑल योर आंसर्स इन पेन, यू नो, फॉर एग्जांपल इन कैपिटल्स, तभी जाके प्रॉब्लम नहीं होगी. ये न्यू टाउन जैसे कि है तो उसकी भी आंसर्स आपको कैपिटल में ही लिखने चाहिए. So make sure न्यू टाउन के बीच में स्पेस नहीं होगा तो चलेगा. There is no need to have space. You can write new town together. It's basically not a new town. It's new town. पूरा नाम ही new town है. Okay. So let us go for now questions number 17 to, yeah, this is true for both reading and listening. जनश्रुत, you know, आपको रीडिंग और लिसनिंग में दोनों में आपको सारे आंसर्स कैपिटल्स में लिखने पड़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है. लोअर केस में लिख सकते हो लेकिन लोअर केस में प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो ऐसे केस में इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट यू राइट ऑल योर आंसर्स इन कैपिटल्स. अंडरस्टूड? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17. सो लेट अस सी. देख लीजिए पहले इसको. Now listen. ओके ओके, ठीक है, चलो वापस कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. And answer questions 15 to 20. Well, here we are at the top of the tower, and we're going to look at the view from each direction. Out to the east, the large buildings about a kilometre away are on the Olympic site. There's an indoor arena for gymnastics, a stadium for track and field, and a swimming pool for races and synchronized swimming, and also diving. If you look carefully down there, you can see the train lines. The Olympic site has its own station to encourage the use of public transport. There is also a car park, but it only holds a limited number of cars. The formal park has some specially created water features. If you look out here to the south, you can see a circular ornamental pond. And around to the west, you can relax and sit on a bench to smell the flowers in the rose garden. And finally, up to the north, if you look in front of you now, there's a lake with a small island in the centre. You can hire rowing boats at the boat shed, which you can't see from here. But if you look through the trees, you can see the cafe, which has lovely views across the water. Okay, let's climb down. ओके, ये शायद थर्सडे को हुआ था तो कोई बात नहीं. सो आई बिलीव दैट दिस इज डन. या, सो आंसर ऑफ 15 इज गोइंग टू बी 15 का आंसर है कार पार्क. द आंसर ऑफ 15 इज गोइंग टू बी कार पार्क. द आंसर ऑफ 17 इज सॉरी, या 15 इज गोइंग टू बी कार पार्क. 16 जो है वो है रोज गार्डन. तो यहाँ पे लिखा है कि जो है ये बेंचेस इसकी तरफ है, तो आंसर ऑफ दैट इज गोइंग टू बी रोज गार्डन. एंड आंसर ऑफ 17 इज गोइंग टू बी द कैफे. क्लियर? ओके, सो लेट अस गो अहेड नाउ. रोज गार्डन एंड कैफे. नाउ लेट अस डू दिस. ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर पार्क के बारे में करते हैं. जस्ट गो थ्रू इट वंस अगेन. आपको करना है क्वेश्चंस 12, 13, 14. Listen carefully and answer questions 11 to 14. Welcome to Greenvale Agricultural Park. As you know, we've only been open a week, so you're amongst our first visitors. We have lots of fascinating indoor and outdoor exhibits on our huge complex, spreading hundreds of hectares. Our remit is to give educational opportunities to the wider public
as well as to offer research sites for a wide variety of agriculturists and other scientists. Let's start by seeing what there is to do. As you can see here on our giant wall plan, we are now situated in the reception block here. As you walk out of the main door into the park, there's a path you can follow. If you follow this route, you'll immediately come into the rare breeds section, where we keep a wide variety of animals, which I shall be telling you a little more about later. Next to this, moving east, is the large grazing area for the rare breeds. Then further east, in the largest section of our park, is the forest area. South of the grazing area, and in fact just next to the reception block, is our experimental crop area. In the middle of the park, this circular area is our lake. These two small rectangular shapes here are the fish farms where we rear fish for sale. To the east of those is the marsh area, which attracts a great many migrant birds. In the southeastern corner, beyond the marsh, is our market garden area, growing vegetables and flowers. Listen carefully. Okay, this is a very good map, you know, in a way, if you want to know southeast, ये जो directions है उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, northeast, southeast, तो ये बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है. So I want you to have the answers. And if you want me to play, see, for any map, if you want me to play it again, I can do that. Please, absolutely fine. Yeah, what is the answer? So answer of 12th one is going to be forest area. अब याद रहे कि क्योंकि एरिया ऑलरेडी अंदर दिया गया है तो यू ओनली नीड टू राइट फॉरेस्ट. सो अगर आपने 12th का आंसर फॉरेस्ट एरिया लिख दिया है, द आंसर इज गोइंग टू बी मार्क्ड एज अ रॉन्ग आंसर. सो आंसर ऑफ 12th इज गोइंग टू बी फॉरेस्ट. इस तरफ और बाद में ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं. 13th का उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो है वो फिश फार्म्स है. सो आंसर ऑफ 13th इज गोइंग टू बी फिश फार्म्स. इस तरफ मार्स है और इस तरफ 14 के साउथ ईस्ट, ये जो आप जहाँ पे हो उसके साउथ ईस्ट पे यू विल फाइंड आउट मार्केट गार्डन. तो याद रहे मार्केट गार्डन लिखना है, मार्केट गार्डन एरिया नहीं लिखना है. अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ द आंसर्स आर. ये आपके आंसर्स है. 12th इज गोइंग टू बी फॉरेस्ट, 13th is going to be fish farms or fish farm, and 14th is going to be market garden. Now let me explain you how these answers can be written. You can see all the answers are written in capitals. बट याद रहे ये जो ब्रैकेट में दिया है, दिस थिंग इज नॉट मैंडेटरी. ये आप लिख सकते हो क्योंकि 2 वर्ड्स लिखना है आपको. 2 वर्ड्स से ज्यादा यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा है? ओके, 2 वर्ड्स. इसका मतलब 2 वर्ड्स अलाउड है. तो इसका मतलब ये हुआ कि द आंसर कैन बी दी फॉरेस्ट और दी फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट लिखो या दी फॉरेस्ट. मतलब जो ब्रैकेट में है वो डेट इज नॉट कंपलसरी, बट अगर आपने लिखा होगा तो आंसर इज कंसिडर्ड एज राइट. जैसे कि 13 का आंसर फिश फार्म भी लिख सकते हो और फिश फार्म्स भी लिख सकते हो, और बाद में 14 का आंसर जो है वो मार्केट गार्डन है. याद रहे दिस इज डिफरेंट टू न्यू टाउन. न्यू टाउन में काफी बच्चे ऐसा पूछ रहे कि सर न्यू और टाउन में डिफरेंस होने चाहिए, नहीं होने चाहिए. तो न्यू टाउन वो नाम है और ये मार्केट और गार्डन, वो मार्केट गार्डन अलग अलग वर्ड है. सो देयरफॉर यू कैन नॉट मिक्स देम अप. यू कैन नॉट ऐड मार्केट गार्डन टुगेदर. द आंसर हैज टू बी मार्केट गार्डन सेपरेटेड, बट एवरी आंसर शुड बी रिटन इन कैपिटल्स. अंडरस्टूड एवरीबडी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. ये बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स. I don't know how many of you will get this answers. ये बहुत difficult है. Let me see how this can be done. मैं इसको वापस replay करूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप इसको गौर से देखें. Questions number 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20, and I want you to go through it properly. Just go through it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. जल्दबाजी नहीं करनी. आई एम गोइंग टू गिव यू टाइम, डोंट वरी.
Done reading? Let me know. Yeah. Kindly go through all the options: trees, widened footpaths, colored road surface, new sign, traffic lights, artwork, children's playground. So you need to write A, B. अब देखो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 है, मतलब एक नहीं यूज होने वाला है. One is not going to be utilized. That's also what you need to take care of. Okay, let's get started. Write 14 to 20 in your notebook. And answer questions 14 to 20. Now, we've also put together a map, which we sent out to all the residents in the area. And on the map, we've marked the proposed changes. Firstly, we'll plant mature pine trees to provide shelter and shade just to the right of the supermarket in Days Road. In order to address the traffic problems, the pavements on the corner of Carberry and Thomas Street will be widened. This will help to reduce the speed of vehicles entering Thomas Street. We think it's very important to separate the local residential streets from the main road, so the roadway at the entrance to Thomas Street from Days Road will be painted red. This should mark it more clearly and act as a signal for traffic to slow down. One way of making sure that the pedestrians are safe is to increase signage at the intersections. A Keep Clear sign will be erected at the junction of Evelyn Street and Hill Street to enable traffic to exit at all times. Something we're planning to do to help control the flow of traffic in the area is to install traffic lights halfway down Hill Street where it crosses Days Road. Now, we haven't only thought about the cars and traffic, of course. There's also something for the children. We're going to get school children in the area to research a local story, the life of a local sports hero, perhaps. And an artist will incorporate that story into paintings on the wall of a building on the other side of Hill Street from the supermarket. And finally, we've agreed to build a new children's playground, which will be at the other end of Hill Street, close to the intersection with Carberry Street. Wonderful. Now, what's the next stage? It is done. I want the answers. Was it difficult, students? Yes. Was it difficult? कुछ पता नहीं चला. Okay. काफी लोगों, yeah, I'll be replaying that. I know, I'll be playing this once again. I'll be explaining this to you. But before I do that, I want you people to give me the answers. Yeah, ये confusing भी है और difficult भी है. Let us see. एक मिनट. C D G B F E E. नहीं, किसी के भी आंसर सारे गलत, सारे सही नहीं है. किसी के भी आंसर. Yeah, we'll try this once again. Don't worry. Okay. So let us go through it once again. Let me explain you. Well, the final plan. That is the end. And answer questions 14 to 20. Now, we've also put together a map, which we sent out to all the residents in the area. And on the map, we've marked the proposed changes. Firstly, we'll plant mature pine trees to provide shelter and shade just to the right of the supermarket. Okay, so यहाँ पे pine trees लगाए जाएंगे on the right of the supermarket. ये थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो supermarket सर कहाँ है? So if you look at this properly, the supermarket is this. ये जो है ये लिखा है supermarket. देखिए ये रहा supermarket. उसके right hand side पे यहाँ पे pine trees लगाए जाएंगे. So therefore, the answer of 14 is going to be C. तो इसका आंसर जो होगा 14 का C, क्योंकि supermarket के इस तरफ trees लगाए गए हैं. So answer of 14 is C. I am going very very slow. Let me know if you are not clear. So answer of 14 is C. चलिए आगे बढ़ते हैं. In Days Road. In order to address the traffic problems, the pavements on the corner of Carberry and Thomas Street. The pavements on the corner of Carberry Street and Thomas Street. ये जो है तो ये कौन सा हुआ? Carberry Street ये हुआ. यहाँ पे देखो ये यहाँ पे है तो ऐसा मत सोचो कि इसके बाजू बाजू में ही मेरा आंसर होगा.
मैप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उसके आजू बाजू में नहीं होता आंसर, ये कहीं और की बात भी कर सकते हैं कभी भी. सो यू कैन सी ओवर हियर दैट पेमेंट ऑन द जंक्शन ऑफ कार्बरी स्ट्रीट एंड थॉमस स्ट्रीट पे वो कुछ करने वाले हैं. तो ये हुआ डी हुआ, therefore the answer of 15 is going to be D. Understood everybody? Will be widened. This will help to reduce the speed of vehicles entering Thomas Street. ठीक है, so answer of this is going to be D. Clear हो गया कि नहीं everybody? Just hold on. Yeah, so let us go ahead now. We think it's very important to separate the local residential streets from the main road. So the roadway at the entrance to Thomas Street from Days Road will be painted red. चलो वो कौन सा हुआ? थॉमस स्ट्रीट से लेके डेज रोड वाला. तो कौन सा आंसर होगा? चलिए थॉमस स्ट्रीट से डेज रोड वाला. So answer of therefore 16 जो होगा that is going to be G. Is it getting clear? So 16 is going to be G. Very good. चलिए आगे बढ़ते हैं. Just a minute. Just give me one minute, students. Just give me 1 minute. This should mark it more clearly and act as a signal for traffic to slow down. One way of making sure that the pedestrians are safe is to increase signage at the intersections. A Keep Clear sign will be erected at the junction of Evelyn Street and Hill Street. There will be clear signage between the junction of Hill Street and Evelyn Street. बताइए क्या होगा आंसर? Hill Street and Evelyn Street. क्या होगा आंसर? B. अब क्लियर हुआ? Hill Street और Evelyn Street देखो कहाँ पे है? ये Hill Street है और ये Evelyn Street है. So therefore the answer of this is going to be B. So 17 का आंसर जो होगा is going to be B. Is it clear? Getting clear? अगर आप इसको ठीक से करोगे तो बहुत इजी है. जंक्शन ही पकड़ना है, 2 लाइन का जंक्शन क्या है उसी के हिसाब से जाओगे तो वेरी इजी. अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं. To enable traffic to exit at all times. Something we're planning to do to help control the flow of traffic in the area is to install traffic lights halfway down Hill Street where it crosses Days Road. Halfway down Hill Street where it crosses Days Road. पहले ये समझो, halfway down Hill Street कौन सा है? This is going to be Hill Street. यहाँ पे देखो, this is going to be Hill Street और half day round Days Road, मतलब यहाँ पे कहीं पे. तो ये क्या हुआ आपका आंसर? F हुआ. So answer of 18 is going to be F. Understood everybody? Yes or no? So answer of 18 is going to be F. Okay? चलिए आगे बढ़ते हैं. Now, we haven't only thought about the cars and traffic, of course. There's also something for the children. We're going to get school children in the area to research a local story, the life of a local sports hero, perhaps. And an artist will incorporate that story into paintings on the wall of a building on the other side of Hill Street from the supermarket. On the other side of the Hill Street to the supermarket. Hill Street और supermarket के उस तरफ. बताओ कौन सा होगा? Hill Street वहां पे पेंटिंग करने वाले हैं. They are going to do the painting. नहीं ठीक से देखो, हिल स्ट्रीट के अदर साइड ये सुपरमार्केट है उसके ऑपोजिट साइड और हिल स्ट्रीट के यहाँ, तो मतलब क्या होगा? उस पे पेंटिंग करने वाले हैं. सो आंसर ऑफ 19 इज गोइंग टू बी ए. ये जो है यहाँ पे ये दीवार जो है उसके ऊपर पेंटिंग करेंगे जहाँ पे हिस्ट्री के बारे में शायद कुछ पेंट करेंगे. तो देयरफॉर द 19 इज गोइंग टू बी ए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. And finally, we've agreed to build a new children's playground, which will be at the other end of Hill Street, close to the intersection with Carberry Street. Other end of Hill Street to the intersection of Carberry Street. तो याद रखना है कि यहाँ पे एवलिन स्ट्रीट है इस तरफ, लेकिन इंटरसेक्शन ऑफ कार्बरी स्ट्रीट है. सो आंसर ऑफ ये क्या होगा? आंसर इंटरसेक्शन ऑफ हिल स्ट्रीट एंड कार्बरी स्ट्रीट. सो आंसर ऑफ 20 इज गोइंग टू बी ई. अंडरस्टूड? तो ये आपका आंसर हुआ. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. क्लियर हो गया? तो ये आपके आंसर है. 14 इज सी, 15 is D, 16 is G, 17 is B, 18 is F, 19 is A, and 20 is E. Yeah, very good, Utkarsh. Very nice. Excellent.
Yeah, very good. Many of you got all correct, but it is very good. ये आपको पता चलेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको ऐसे टाइप के लिस्टिंग में क्या करना है, क्रॉस सेक्शंस को याद रखो, जो रोड है उसके साथ कौन सा मिलता है, तो बहुत आसान हो जाएगा. यू डोंट नीड टू वरी. अंडरस्टूड? या देयर आर 2 मोर. शैल वी डू इट? एक दो और बाकी है, करने हैं आगे. हमने 8 ग्राफ किए. या चलिए आगे कुछ करते हैं. चलिए लेट अस सी. हाँ, ये करते हैं. चलिए पहले देख लीजिए कौन सा है ये. ये हो गया है. इज इट डन एवरीबॉडी? हाँ ठीक है, चलिए ये हो गया है. इज इट डन? टेल मी अबाउट दिस वन. नहीं नहीं, ये आपके सामने जो है ये. ठीक है, चलिए इसको करते हैं. इज इट डन स्टूडेंट्स? नो. ओके, जस्ट गो थ्रू इट. क्वेश्चंस नंबर 15 to 20. ये भी डिफिकल्ट है. लेट्स डू इट. जस्ट गो थ्रू इट. वंस यू आर डन गोइंग थ्रू ऑल ऑफ देम, लेट मी नो. यहाँ पे भी आंसर्स कहीं पे भी आ सकते हैं. यू कैन expect answers to come down from any part of the map. Okay. Now listen. Listen and answer questions 15 to 20. The sheep market is one of the main centres for art and history in the whole of the country. If you look at our map, you'll see some of the main attractions there. Most visitors start from Crawley Road at the bottom of the map. The Reynolds House is one of the oldest houses in the city and is open to the public. It's on the north side of Crawley Road, next to the footpath that leads to the public gardens. The area is particularly interesting for its unusual sculptures. The thumb is just what its name suggests, but it's about 10 metres high. You'll see it on Hill Road, across the road from the bank. The museum's got a particularly fine collection of New Zealand landscapes. It's on the east side of the sheep market on City Road. It's on the other side of the road from the public gardens, immediately facing the junction with Hill Road. The Contemporary Art Gallery is on a little road that leads off Station Square, not far from the public gardens. The road ends at the gallery. It doesn't go anywhere else. That's open every day except Mondays. The Warner Gallery specialises in 19th century art. It's on City Road, near the junction with Crawley Road, on the same side of the road as the public gardens. It's open on weekdays from 9 to 5 and entry is free. Finally, if you're interested in purchasing high-quality artwork, the place to go is Nucleus. You need to go from Crawley Road up through Station Square and east along Hill Road until you get to a small winding road turning off. Go up there and it's on your right. If you get to City Road, you've gone too far. ये भी difficult था. चलिए, let me know who's getting the right answers. I'll play this again, don't worry. नो, गलत है. श्रेया, 15 से स्टार्ट करना है आपको. यू नीड टू स्टार्ट ऑन 15th. नहीं, काफी लोगों की गलत है. लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट रॉन्ग आंसर्स. ओ माय डियर फ्रेंड. चलिए वापस प्ले करते हैं इसको. लेट मी प्ले दिस अगेन. ये कैम्ब्रिज का ही है. लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट समथिंग दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम आउटसाइड. Now listen and answer questions 15 to 20. No, nobody is going to replay. The sheep market is one of the main centres for art and history in the whole of the country. If you look at our map, you'll see some of the main attractions there.
Most visitors start from Crawley Road at the bottom of the map. The Reynolds House is one of the oldest houses in the city and is open to the public. It's on the north side of Crawley Road. It is on the north side of Crawley Road. अब बताओ नॉर्थ साइड Crawley Road पे कौन सा है? ये ऊपर दिया है, ये नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट है. अब देखो ये Crawley Road पूरा है, उसके नॉर्थ साइड पे है. क्या है बताओ आंसर? What is the answer of that going to be? G नहीं है, G पे नहीं है, H होगा ना. अब ज्यादा भी वो लोग बोलने वाले हैं. They are also going to speak something more about that part. Next to the footpath that leads to the public garden. Next to the public gardens. अब बताओ मुझे Crawley Road नॉर्थ पे है और नेक्स्ट टू पब्लिक गार्डन है. अब बताओ मुझे कौन सा आंसर होगा? या व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? H होगा ना. So answer of 15 is going to be H. Got? चलिए. The area is particularly interesting for its unusual sculptures. The thumb is just what its name suggests, but it's about 10 meters high. You'll see it on Hill Road, across the road from the bank. Across the road from the bank. Hill Road पे है, across the road on the bank. तो बैंक के रोड जो है उसके अक्रॉस में होगा. अब बताओ मुझे कौन सा आंसर होगा? नहीं, पहले हिल रोड पे बैंक के अक्रॉस में होगा. बैंक के अक्रॉस में मतलब सामने की तरफ. बैंक के अक्रॉस में मतलब सामने की तरफ. इज इट गेटिंग क्लियर? सो आंसर क्या होगा? बैंक ये है, उसके सामने तरफ. तो आंसर इज गोइंग टू बी सी. अंडरस्टूड? सो 16 इज गोइंग टू बी सी, नॉट डी. ये रहा हिल रोड पे है और पहले उन्होंने ये भी बताया कि ये हिल रोड पे है और बैंक के अक्रॉस में है. सो बैंक के अक्रॉस में ये पूरा हिल रोड है और उसके अक्रॉस में है, दैट्स सी. So answer of 16 is going to be C. Understood everybody? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. The museum's got a particularly fine collection of New Zealand landscapes. It's on the east side of the sheep market on City Road. East side of the city market on City Road. अब देखो ये City Road तो ये रहा. पहले लोकेशन देखो क्या है. This is going to be City Road. अब देखो क्या है, वापस करते हैं. East side of the It's on the other side of the road from the public gardens, immediately facing the junction with Hill Road. Immediately facing the junction. ये junction है, उसको face करता है. On the other side. So therefore the 17 is going to be F. 17 is going to be F. चलिए आगे बढ़ते हैं. The Contemporary Art Gallery is on a little road that leads off Station Square, not far from the public gardens. The road ends at the gallery. It doesn't go anywhere else. The road ends at the gallery, which doesn't go anywhere else. वहां पे है आपकी कंटेम्पररी आर्ट गैलरी. अब बताओ क्या है? एक ऐसा रोड जो खत्म हो जाता है, वहां पे आगे कुछ जाता नहीं है. वो कौन सा है? कौन सा रोड है जो आगे जाता नहीं है? रोड पे उसी साइड पे है, तो वो है जी. देखो यहाँ पे है, ये रोड निकलता है लेकिन आगे कहीं जाता नहीं है. सो आंसर ऑफ 18 इज गोइंग टू बी जी. अंडरस्टूड? जी होगा, जी. रोड आगे जाता नहीं है, तो ये जी वाला ही रोड है जो आगे नहीं जाता. That's open every day except Mondays. The Warner Gallery specialises in 19th century art. It's on City Road, near the junction with Crawley Road. City Road near the junction with Crawley Road. ये City Road और ये junction है. अब यहाँ पे दो options है आपके पास, H और I. और क्योंकि H already हो चुका है, क्योंकि H already आंसर आ चुका है, therefore the answer has to be I. और वापस on the same side of the road as the public gardens. On the same side of the road as the public gardens. मतलब public garden जो जिस तरफ है उसी तरफ है ये. ये public garden है, उसी तरफ तो I है. So answer of 19 is going to be I. Understood? Okay, आगे बढ़ते हैं. It's open on weekdays from 9 to 5 and entry is free. Finally, if you're interested in purchasing high quality artwork, the place to go is Nucleus. You need to go from Crawley Road up through Station Square and east along Hill Road. Crawley Road से आगे जाना है. वापस देखिए इसको, मैं वापस करता हूँ इसको. Square and east along Hill Road until you get to a small winding road turning off. Until you come into across the small winding road. अब देखो आगे. Go up there and it's on your right. It is on your right. It is on your right. क्या आंसर आएगा? It is on your right. तो ये B हो जाएगा. Is it getting clear? क्योंकि आगे हमने F already दे चुके हैं हम लोग. और तो it is going to be on your right. मतलब ये हिल रोड पे राइट पे है. If you get to City Road, you've gone too far. अगर आप आगे चले गए तो सिटी रोड आ जाएगा, तो बहुत आगे चले गए हो आप. तो इसके पहले ही आ जाएगा. So therefore the answer of 20 is going to be B. Any questions, any doubts? Yes students. Any questions, any doubts? Clear हो गया मैप पूरा.
ये जो है हमने जो किया है आज, इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा इन केस इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस वंस अगेन, यू कैन प्रैक्टिस। मैं चाहूंगा ये सारे मैप्स आप वापस प्रैक्टिस कीजिए, गो टू द रिकॉर्डिंग वंस अगेन, क्योंकि यहाँ पे हमने जो किया है काफी मैप्स होते हैं कैम्ब्रिज में, लेकिन ये हमने वही मैप्स लिए जहाँ पे हमें लगता है कि आपको गड़बड़ होने की प्रॉब्लम है। सो इफ यू गो टू दिस मैप्स you probably will not face too many problems in the listening, okay? But I'm not going to go away, let us 19th आंसर का रिकॉर्डिंग आपको करना है। 19, या लेट मी डू इट वंस अगेन। किसी ने बोला 19th का रिकॉर्डिंग कीजिए, चलिए। The Warner Gallery specializes in 19th century art. It's on City Road. It's on the City Road. Warner Gallery कहाँ पे है? वो City Road पे है। Is it getting clear? Okay. Near the junction with Crawley Road, on the same side of the road as the public garden. On the same side of junction पे है और on the same side of the road as the public gardens. So therefore the answer of 19 is going to be I. Understood? So इसी के कारण आंसर is going to be I. Okay. अब मैं चाहूंगा आप एक बहुत अच्छा मैं ये सेशन लेने वाला हूँ। अब मैं चाहूंगा सारे लोग यहाँ पे रहे। काफी बच्चों के में डिफरेंट डिफिकल्टीज आती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SDS एंड नॉन SDS फॉर कैनेडा स्टूडेंट वीजास। मैं चाहूंगा सारे लोग, जो लोग PR के लिए वाले हैं, वो लोग भी इसको गौर से देखें। ये बहुत अच्छा सेशन, छोटा सा है, 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन कैन एनीवन टेल मी द डिफरेंस बिटवीन SDS एंड नॉन SDS फॉर कैनेडा स्टूडेंट वीजास? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन द टू? डोंट गो, मैं 5-7 मिनट में के सेशन में आपको छोड़ दूंगा, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं कनाडा या तो फिर PR के बाद भी ये चीज जो होगी वो काम लगेगी। ओके, सो ये क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज SDS? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज SDS? यस, व्हाट इज SDS? राइट इन द चैट बॉक्स। नहीं, स्टूडेंट वीजा नहीं, SDS बताओ क्या है। SDS का फुल फॉर्म बताओ क्या है। Very good. The full form of SDS is Student Direct Stream. For example, if you want to go to Canada for studies, you must have surely come across term called SDS versus non-SDS. Let us understand SDS and non-SDS visa stream and which one is right for you. Okay, मैं इसके बारे में आता हूँ। बहुत अच्छा सेशन होगा 5 मिनट का, but it is going to be helpful. So SDS और non-SDS का मतलब क्या होता है? SDS का मतलब है Student Direct Stream और नॉन SDS का मतलब होता है नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। नाउ सर, उसमें फर्क क्या है? नाउ पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये SDS था क्या, आई मीन व्हाई इट हैज बीन डिजाइंड। SDS stream has been designed in collaboration with Canadian government and Indian government and the government of many other countries like Bangladesh, Sri Lanka, कि बच्चों को ज्यादातर केस में फाइनेंस के बहुत प्रॉब्लम्स आते थे। स्टूडेंट्स वीजाज वर गेटिंग रिफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ शोइंग बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो ये प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया agreed upon terms and conditions wherein students will not be required to show any financial documents when they apply for visa. तो उसी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो स्ट्रीम निकाली है उसको हम कहेंगे SDS, जिसको हम कहेंगे स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। नॉन SDS का मतलब होता है नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। अब इसमें फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करेंगे। SDS में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि you should get minimum 6 bands in IELTS with not less than 6 bands in any individual skill। मतलब आपको दो तरीके, मतलब बच्चे ये समझते हैं कि 6.5 बैंड्स होंगे तो ही हम SDS के लिए रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके सारे मॉड्यूल्स में 6 बैंड्स है और ओवरऑल भी 6 बैंड्स है, जाहिर है आपके 6.5 में है सब में, लेकिन ओवरऑल 6 तो फिर भी होंगे। लेकिन फर्ज करो अगर आपके 6, 5.5 और 6 है तो नहीं चलेगा। अगर आपके 6.5 है लेकिन एक में 5.5 है तो भी आप SDS में नहीं रख सकते। सो SDS में तभी रख सकते हैं आप फाइल जब आपके पास सारे मॉड्यूल्स में 6 बैंड्स है। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको $10,000 GIC अकाउंट में डालने कंपलसरी है। यू नीड टू कंपलसरीली फिल योर अकाउंट। नोवा स्कॉटिया बैंक है, ICICI बैंक में भी अब तो डाल सकते हो आप पैसे। ये सर पैसे किसके लिए होते हैं? ये पैसे उसके लिए होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वहां पे आप जाते हो और आपके जो रहने खाने पीने का जो खर्चा है, तो गवर्नमेंट ने ये कैलकुलेट किया है कि एक आदमी को, एक स्टूडेंट को हर साल $10,000 का हम खर्चा होता है। इंडियन बच्चे जाते हैं उससे काफी कम होता है, लेकिन ये गिनती उनके हिसाब से है। तीसरी इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको 1 साल की ट्यूशन फी भरनी पड़ेगी। तो अगर आपकी कॉलेज की फीस जो है वो $15-16 हज़ार है तो आपको वो $15-16 हज़ार भरने पड़ते हैं, तभी जाके आप SDS में फाइल रख सकते हो। और इसमें मेडिकल चेकअप कंपलसरी है। आपको शायद पता होगा
कि बच्चे जब ये फाइल रखते हैं तो मेडिकल्स उनका जाना जरूरी है, और मेडिकल उसी में कर सकते हो जहाँ पे जिन्होंने इनको डेजिग्नेट किया है, जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल्स है, केडी हॉस्पिटल अगर अहमदाबाद की बात करें तो वो हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन इतना याद रखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है, नंबर 1 आपने 6 बैंड सब मॉडल में लाने जरूरी है, नंबर 2 आपने $10,000 जीआईसी अकाउंट में भरने कंपलसरी है, नंबर 3 आपने फुल ट्यूशन फी भरनी जरूरी है, और नंबर 4 आपका मेडिकल चेकअप होना जरूरी है। ये 4 अगर आपके पास है तो ही आप एसडीएस में फाइल रख सकते हो, उसके बगैर आप एसडीएस में फाइल नहीं रख सकते। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं आपको एसडीएस फाइल रखने के लिए। पहला है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम एलओए, जिसको हम कहेंगे एलओए फ्रॉम डीएलआई यूनिवर्सिटी। डीएलआई मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट। डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट खुद चालू हो जाता है और आप उसमें एडमिशन ले लेते हो, वो नहीं चलेगा। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए। आपने गवर्नमेंट ने जिस यूनिवर्सिटी को घोषित किया है, जैसे कि इंडिया की बात करें तो हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती है, जो यूजीसी से ग्रांट यूनिवर्सिटीज होती है, उसी में आप रख सकते हो। तो ये भी है, ये है आपका एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होना चाहिए डीएलआई यूनिवर्सिटी में से। आईएलटीएस की मार्कशीट होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो। पहले साल की ट्यूशन फी आपने भरी, उसकी रिसिप्ट, ये रिसिप्ट जो होती है, 2 रिसिप्ट आएगी आपकी। एक तो बैंक की तरफ से आएगी जहां से आपने $10,000 भरे हैं, उसका फ्लाई वायर की जो रिसिप्ट होती है वो होती है। और जब आप ये भरते हो तो बैंक की भी एक रिसिप्ट आती है। तो ये आपको you will have to I mean utilize it और upload it while you are applying for SDS। उसके साथ $10,000 का जीआईसी सर्टिफिकेट हम कहते हैं जब आप भरते हो वो मिलता है, ये भी आपको डालना पड़ेगा। मेडिकल चेकअप के रिपोर्ट्स डालने पड़ेंगे, सारे ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब आपको जैसे कि आपने 10th है, 12th है, कॉलेज की मार्कशीट से, डिग्री सर्टिफिकेट से, अगर आपने डिप्लोमा के लिए या बैचलर्स के लिए जाते हो 12th के बाद, तो 12th की मार्कशीट आ जानी चाहिए। और अगर आप फॉर एग्जांपल आप बैचलर्स के बाद जाते हो तो बैचलर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंड फाइनली वीजा फॉर्म और वीजा फीस की पेमेंट रिसिप्ट, तकरीबन 10 से 12,000 रुपए का खर्चा होता है। $150 प्लस $85, $150 जो होते हैं वो है उसकी वीजा फीस, और $85 जो है वो है उसकी बायोमेट्रिक की फीस। ये दोनों मिला के तकरीबन 10 से 12,000 का खर्चा होता है। सो दिस आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एसडीएस प्रोसेसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नॉन एसडीएस के लिए जाते हो तो थोड़े से डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं, द डॉक्यूमेंट्स इंक्रीजेस। मैंने पहले भी बताया था कि एसडीएस में क्यों कॉम्प्लेक्सिटीज कम करने के लिए बनाया गया है। और नॉन एसडीएस जो है उसमें आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको एलओए तो चाहिए, आईएलटीएस की मार्कशीट भी चाहिए। आपने अगर पहले सेमेस्टर की अगर ट्यूशन फीस भरी है तो वो आप भर सकते हो। यहाँ पे एक चीज का याद रखना है कि आपको $10,000 जो जीआईसी में आप भरते हो एसडीएस में, वो भरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर अगर पूरी पे नहीं करनी है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की पे करनी है, तो भी आप कर सकते हो। इसके लिए मेडिकल चेकअप रिपोर्ट चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट भी चाहिए, और वीजा फी और वीजा की रिसिप्ट तो चाहिए। लेकिन अगर आपने गौर से किया होगा तो यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हो वो और चाहिए, वो है प्रूफ ऑफ फंड। बैंक स्टेटमेंट है, बैंक सर्टिफिकेट है, लोन डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म 16, इनकम टैक्स रिटर्न, फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर आपको गौर करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एसडीएस में नहीं चाहिए थे, तो ये नॉन एसडीएस में चाहिए। दूसरी बात, एसडीएस में सिर्फ और सिर्फ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, नॉन एसडीएस में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। ओके, नाउ लास्ट, सर इसमें फर्क क्या है? तो भाई एसडीएस की भी प्रोसेसिंग फास्ट होती है, कम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, $10,000 की आपकी सर्टिफिकेट जीआईसी कंपलसरी होती है, और 1 साल का पूरा आपको फीस भरना पड़ता है, और मिनिमम 6 बैंड्स चाहिए, और ये सिर्फ ऑनलाइन है। नॉन एसडीएस की प्रोसेसिंग ज्यादा बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी। जीआईसी नहीं भरोगे तो चलेगा, पहले सेमेस्टर की ही सिर्फ ट्यूशन फी भरोगे तो चलेगा। लोअर बैंड आपके आईएलटीएस में है तो भी आप कर सकते हो, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेस कर सकते हो। ये फर्क रहता है एसडीएस और नॉन एसडीएस में। अब मैं आपको बाद में बताता हूं कि सर मैं क्या करूं। ओके, वीजा रिफ्यूजल रेट क्या है? वीजा रिफ्यूजल रेट तकरीबन दोनों में सेम है। डॉक्यूमेंट्स ज्यादा चाहिए, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स ठीक से रखे तो दोनों में वीजा मिलेंगे आपको। और आपका जो कोर्स है और आपकी जो जाते हो, वो आपके कोर्स का आपका जो बैकग्राउंड है वो अलाइनमेंट में होना चाहिए। मतलब आपने बैचलर्स किया है आईटी में और आप फाइनेंस लेने चले जाते हो तो नहीं चलेगा, वो तो दोनों में नहीं चलेगा। अब ये क्वेश्चन निकल के आता है, सर मैं एसडीएस करूं या नॉन एसडीएस? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं। द फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू ओनली डू एसडीएस फाइल्स। कारण क्या है? उसका कारण ये है, द रीजन इज दैट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द फिनेंसेस। आपके वीजा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? इसलिए नहीं कि आपका फाइल स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि आपके 6.5 बैंड्स विद नो लेस देन 6 होते हैं, तो उससे एक फायदा रहता है, तभी आप एसडीएस में रख सकते हो।
और दूसरा आपको सोर्स ऑफ फिनेंस, मतलब आपने अगर कॉलेज की पहले साल की फीस भरी है और अगर आपने जीआईसी की भरी है फीस, तो उस कहाँ से आया वो सोर्स नहीं दिखाना पड़ता। मतलब अगर फर्ज करो आपने चाचा जी के पास पैसे ले लिए, चाचा जी मैं वहां पे जाऊंगा और कमाने के बाद आपको पैसे वापस दे दूंगा, तो चाचा जी ने अपने अकाउंट में पैसे डाल दिए और आपने उसी अकाउंट से आपने पैसे भर दिए, तो कोई पूछने वाला नहीं है भाई ये पैसे कहाँ से आए। लेकिन अगर आप नॉन एसडीएस में रखते हो तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा भाई ये 5 लाख की एंट्री की है तो कहाँ से आई, वेदर इट हैज कम फ्रॉम तो आपको सोर्स ऑफ फंड्स भी दिखाने पड़ते हैं। तो उसी के कारण नॉन एसडीएस में ये स्ट्रॉन्ग फंड्स अगर स्ट्रॉन्ग है तभी आप नॉन एसडीएस में करें। अब आप पूछोगे सर कि मैं एसडीएस में करूं या नॉन एसडीएस में, मैंने अभी बताया आपको कि एसडीएस में ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपको नॉन एसडीएस करना है तो क्यों करना पड़ेगा, तो एक चीज याद रहे, अगर आपने आईएलटीएस दिया, वापस कहना चाहूंगा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सिर्फ एसडीएस की। अगर आपने आईएलटीएस दिया, एक बार दिया 6 बैंड आए, एक में 5.5 आए, दूसरी बार दिया मेहनत की 6.5 आ गए, लेकिन फिर भी राइटिंग में 5.5 आ गए। किसी ने बोला भैया और एक बार ट्राई कर ले, तीसरी बार आपने ट्राई किया वापस 7 आ गए, लेकिन फिर भी एक में 5.5 आ गए। ऐसे केस में आप फिर थक जाते हो, सर मैंने 2-2 3-3 बार आईएलटीएस दी, अब मेरी हिम्मत नहीं बनती आईएलटीएस एक बार और दूं, जितनी भी बार आईएलटीएस दूं एक में 5.5 आ जाते हैं, क्या करूं। ऐसे केस में आई विल गाइड यू कि आप नॉन एसडीएस में फाइल रख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आपने 2-3 बार आईएलटीएस दिए लेकिन यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड स्कोर। तो आप नॉन एसडीएस में फाइल रख सकते हैं, लेकिन मैं तभी रखूंगा उसकी फाइल, मैं आपके फाइनेंस की निगरानी करूंगा। आपका फाइनेंस स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब आपके आईटी रिटर्न्स कंप्लीट होने चाहिए 2-3 साल के, या तो फिर आपके पास फंड स्ट्रांग होना चाहिए, सब कुछ ठीक है, आपका एकेडमिक स्ट्रांग होना चाहिए। फर्स्ट करो अगर आपके 5.5 एक में 5.5 बैंड आ गए, ओवरऑल 6.5 बैंड से एक में 5.5 बैंड आ गए, लेकिन आपका जो एकेडमिक्स है वो स्ट्रांग है, जैसे कि आपके 7 या 8 सीजीपीए है, उसके ऊपर है, बैकलॉग्स बिल्कुल कम है, लेकिन आईएलटीएस बैकलॉग्स मतलब 2-3 बैकलॉग ही है, और आईएलटीएस में कम आ रहे हैं, लेकिन वैसे बैकग्राउंड बिल्कुल स्ट्रांग है, फाइनेंस भी स्ट्रांग है, तो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ भैया तू नॉन एसडीएस में फाइल रख सकता है, उसमें भी वीजा आएंगे। नॉन एसडीएस में फाइल रखने की मैं सलाह तभी नहीं दूंगा जब आपका एकेडमिक्स भी वीक है, भाई आप मांड मांड 50-55% है, आपके फॉर एग्जांपल 15-16 से ज्यादा बैकलॉग्स है, और आपका आईएलटीएस भी 5.5 बैंड से एक में है, तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि नॉन एसडीएस में फाइल रखे, क्योंकि तब आपका वीजा रिफ्यूज ही होना है। आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अगर आपका एकेडमिक स्ट्रांग है, अगर आपका फाइनेंस बता सकते हो, बाहर फाइनेंसेस मिल जाते हैं, और आपके आईएलटीएस में 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी एक में 5.5 बैंड्स ही रह रहे हैं, देन आई कैन सजेस्ट यू टू गो फॉर नॉन एसडीएस। लेकिन पहला जो आपका प्रयत्न होना चाहिए इज टू अप्लाई ओनली फॉर एसडीएस वीजा। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स, अब क्लियर हो गया आपको मैं क्या दोनों का फर्क क्या है और आप नॉन एसडीएस में क्यों फाइल रखोगे, हाँ या ना, राइट इन द चैट बॉक्स। क्लियर। तो ऐसा नहीं है कि नॉन एसडीएस में नहीं रख सकते, नॉन एसडीएस में रख सकते हो, आप बिल्कुल रख सकते हो, उसमें वीजा भी मिलते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए और आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ठीक से कर सकते हो, तो आप नॉन एसडीएस में रखोगे तो भी वीजा मिलने के चांसेस होंगे ही होंगे, उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन। Thank you so much. I'm ending my session. It's almost 11:20, 12:20 according to my watch. Thanks for coming on Sundays. Thank you so much. Bye. Yeah, any questions that you wish to ask, you can always ask me on the chat box. Thank you, students. Yeah, Rajveer, tell me. You wanted to ask me some question? Yes, Sunny, I'll be giving you the list of documents. I think I mentioned, but I forgot, but I'll definitely give it to you tomorrow. Don't worry. Just remind me tomorrow. सितंबर इंटेक में राजवीर नहीं मिलेगा आपको, सितंबर इंटेक में नहीं, आप जनवरी में ट्राई कर सकते हो। या बट दैट्स ट्रू राजवीर, बट यू कैन अप्लाई फॉर जनवरी इनटेक, जनवरी में भी आपको अभी अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा हो तो आप मुझे कल कॉल करें, आई विल डेफिनेटली गाइड यू फॉर जनवरी इनटेक, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सो मच नाउ।